Hope Never Dies. Mahir Ali. Published January 4, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Ringing out the old and ringing in the new at the turn of the year invariably involves wishful thinking. Mostly, the detritus of the recent past flows pretty much seamlessly across the temporal boundary. But there are memorable exceptions, just as there are rare occasions when the frequently fruitless concept of New Year resolutions is substituted by the refreshing reality of New Year revolutions. Haiti in 1804 comes to mind, alongside Cuba in 1959, and the Mexican state of Chiapas in 1994. At the cusp of 2023, the presidential transition in Brazil from Jair Bolsonaro to Luiz Inácio Lula da Silva serves as the clearest example of renewed hope. Small wonder, then, that the new president's third inauguration was greeted with a Lollapalooza on January 1, notwithstanding the foreknowledge of a rather more somber occasion the following day, the funeral of the universally popular footballer known as Pelé. Pelé's renown rests primarily on his remarkable abilities as a goalscorer. It remains to be seen how many of his declared goals Lula will be able to kick. Like most other left-leaning leaders in Latin America, from Mexico to Chile, he will struggle to meet popular expectations amid conditions that are rather less benign than what he encountered during his first two terms. Silver linings disrupt even the bleakest of skies. That's not to suggest that the hopes placed in the switch to a broadly progressive agenda from one that leaned towards fascism are misplaced. Even Lula's failures are likely to prove less harmful than the successes of his noxious predecessor, who fled to Florida, emulating his mate Donald Trump, to avoid the humiliation of handing over the presidential sash to his regime's most prominent former prisoner. A reverse phenomenon was in play just days earlier in Israel, where the inauguration of Benjamin Netanyahu's sixth administration has raised hackles even among fervent Zionists. Rights groups and UN organs found 2022 to be the deadliest year for Palestinians since the last intifada ended in 2005, and much worse, including further formal annexation of the occupied West Bank, lies in store. Much of the concern focuses on the fate of democracy and the rights of women and LGBTQI communities, which is fair enough. What is jarring is the assumption that this is somehow a break from the past. Israel has inexorably been on a trajectory towards right-wing extremism for many years. The new government is the logical conclusion of trends that have not been obvious only to blinkered observers. The idea that a two-state solution is suddenly at risk is utterly absurd. That dream died decades ago. The U.S. often struggles to influence its allies and frenemies, let alone rivals or foes. In the case of Israel, though, it would be fairly simple to turn on the pressure valve. That's hardly likely in the foreseeable future. The U.S. isn't even capable of withdrawing the support that encourages Saudi Arabia to pursue its pernicious aggression in Yemen. Curtailing conflicts goes against the interests of America's lucrative arms export industry. Adding fuel to the fire in Ukraine serves more than one purpose. Volodymyr Zelensky effectively pointed that out during his recent visit to Washington when he said the U.S. should see military aid not as charity but as an investment. Notwithstanding mounting NATO provocations and Zelensky's willingness to be cast as a poster boy for Western hegemony, the war, likely to linger on without resolution in the year ahead, is Vladimir Putin's baby, and the damage it is inflicting in Ukraine may eventually prove easier to repair than the harm it is doing to Russia. The unrelenting focus on Ukraine, and on potential future flashpoints such as Taiwan or North Korea, comes at the expense of virtually ignoring the far deadlier conflict between Ethiopia and Eritrea. Black lives continue to not matter all that much. Iran is on the Western radar by virtue of being a designated foe, but its disorganized rebellion against the obscurantist values of the ruling clergy attracts little assistance apart from words of encouragement. Which is perhaps just as well. The eventual overthrow of the Islamic Republic, much like that of the Shah, must come from within, preferably led by women, who have spearheaded the revolt in the face of repression despite death sentences and recurring tales of prison horror.
Even less attention is focused on neighboring Afghanistan, where the most wretched elements among the Taliban have effectively stripped away women's right to education and gainful employment. Will such travesties and innumerable others, from the rising tide of fascism in Europe to the lip service paid to efforts to thwart catastrophic climate change, determine the shape of things to come? Well, let's not forget the growing movements determined to contest such a future, and remind ourselves that the struggles carry on, and the consequences often surprise us. That's precisely why hope springs eternal. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. साल के इख्तिताम पर पुराने को बजाना और नए में बजना हमेशा ख्वाहिशमंद सोच में शामिल होता है। ज़्यादातर हालिया माजी का खात्मा आरज़ी हद के पार बहुत ज़्यादा हमवार तौर पर बहता है, लेकिन यादगार मुस्तस्नियात मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे शाज़ और नादिर मौक़े होते हैं जब नए साल की करारदादों के अक्सर बेनतीजा तसव्वुर को नए साल के इनकलाबात की ताज़गी बख्श हकीकत से बदल दिया जाता है। 1804 में हिटी जहन में आता है, 1959 में क्यूबा के साथ और 1994 में मेक्सिकन रियासत चियापास। 2023 के इख्तिताम पर ब्राज़ील में जो बोल्सोनारो से लुइज अनासिव दी सिल्वा में सदारती मुंतकली नई उम्मीद की वाज़े मिसाल के तौर पर काम करती है। इसके बाद हैरत की बात यह है कि नए सदर की तीसरी हल्फ बर्दारी का इस्तकबाल 1 जनवरी को लूलापालोजा के साथ किया गया था। इसके बावजूद अगले दिन एक ज़्यादा गमगीन मौका की पेशगोई के बावजूद आलमी सतह पर मकबूल फुटबॉलर की आखिरी रसूमात जो पीले के नाम से जाना जाता है। पीले की शोहरत बुनियादी तौर पर गोल स्कोरर की हैसियत से उनकी काबिल जिक्र सलाहियतों पर मुनहसर है। ये देखना बाकी है कि अपने ऐलान करदा अहदाफ में से कितने लात मार पाएंगे। मेक्सिको से चिली तक लातीनी अमेरिका में बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले दीगर रहनुमाओं की तरह वो उन हालात में अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जिदोजहद करेंगे जो उनकी पहली 2 मियाद के दौरान उनका सामना करने के मुकाबले में कम नर्म हैं। चांदी के उस्तर आसमान के तारीक तरीन हिस्से में भी खलल डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फस्तायत की तरफ झुकाव रखने वाले वसी पैमाने पर तरक्की पसंद एजेंडे की तरफ स्विच में रखी गई उम्मीदें गलत हैं। यहाँ तक कि नाकामियां भी उनके नुकसानदेह पेशरों की कामयाबियों के मुकाबले में कम नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जो अपने साथी डोनाल्ड ट्रंप की तकलीद करते हुए फ्लोरिडा फरार हो गए थे ताकि सदारती सश को अपनी हुकूमत के सबसे मुमताज साबिक कैदी के हवाले करने की जिल्लत से बच सकी। इसराइल में चंद रोज कबल ही एक उल्टा रुझान देखने में आया था, जहां बेंजामिन नेतन्याहू की छठी इंतजामिया के इफ्तिताह ने पुरजोश सहूनियों में भी शकूक और शुबहात पैदा कर दिए। इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने 2005 में आखिरी अंतफाजा के खात्मे के बाद से 2022 को फ़लस्तीनियों के लिए सबसे मुहलिक साल करार दिया है, और इससे भी बदतर सूरत हाल ये है कि मकबूजा मगरिबी किनारे का मजीद बाज़ाब्ता इल्हाक भी शामिल है। ज़्यादातर तशवीश जमहूरियत की किस्मत और ख़वातीन और LGBTQI बरादरियों के हुकूक पर मरकूज़ है, जो काफ़ी मुनसिफाना है। जो चीज़ परेशान कुन है वो ये मफरूज़ा है कि ये किसी न किसी तरह माजी से एक वक्फा है। इसराइल कई सालों से दाएं बाजू की इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है। नई हुकूमत इन रुझानात का मंतकी नतीजा है जो सिर्फ मुबस्सरीन के लिए वाज़े नहीं है। यह ख्याल के 2 रियासती हल अचानक खतरे में पड़ गया है बिल्कुल मुज़हका खेज है। यह ख्वाब कई दहाइयां पहले ही दम तोड़ गया था। अमेरिका अक्सर अपने इत्तेहादियों और दुश्मनों पर असरअंदाज होने के लिए जिदोजहद करता रहता है, हरीफों और दुश्मनों को तो दूर की बात है। इसराइल के मामले में अगरचे दबाव वाल्व को चालू करने के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। मुस्तक़बिल करीब में शायद ही इसका इम्कान हो। यहाँ तक कि अमेरिका इस हिमायत को वापस लेने के काबिल भी नहीं है जो सऊदी अरब को यमन में अपनी तबाहकुन जारहियत को आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करती है। तनाज़ात को कम करना अमेरिका की मुनाफा बख्श असलहे की बरामद की सनत के मुफादात के खिलाफ है। यूक्रेन में आग में ईंधन शामिल करने से 1 से ज़्यादा मकासद पूरे होते हैं।
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन के अपने हालिया दौरे के दौरान मुअस्सर तरीके से इस बात की निशानदेही की जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका को फौजी इमदाद को खैरात के तौर पर नहीं बल्कि एक सरमायाकारी के तौर पर देखना चाहिए। नेटो की बढ़ती हुई इश्तियाल अंग्रेजियों और ज़ेलेंस्की की मगरबी बालादस्ती के पोस्टर बुआई के तौर पर पेश किए जाने की आमादगी के बावजूद जंग मुमकिना तौर पर आने वाले साल में बगैर किसी हल के जारी रहेगी। व्लादिमीर पुतिन का बच्चा है और यूक्रेन में इससे होने वाले नुकसान की तलाफी करना बिलाखिर रूस को पहुंचने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा आसान साबित हो सकता है। यूक्रेन और ताइवान और शुमाली कोरिया जैसे मुस्तकबिल के मुमकिना फ्लैश पॉइंट्स पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो इथियोपिया और एरिट्रिया के माबैन कहीं ज्यादा मुहलिक तनाज़ा को अमली तौर पर नज़रअंदाज करने की कीमत पर आती है। सियाफामोहे की जिंदगियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान एक नामजद दुश्मन होने की वजह से मगरबी रेडार पर है, लेकिन हुक्मरान पादरियों की मुबहम अक़दार के खिलाफ उसकी गैर मुनज़्ज़म बगावत हौसला अफजाई के अल्फाज के अलावा बहुत कम मदद हासिल करती है, जो शायद इतना ही है। शाह की तरह इस्लामी जमहूरिया का तख्ता उलटने का अमल भी अंदर से होना चाहिए, तरजीही तौर पर ख़वातीन की क़ियादत में, जिन्होंने सजाए मौत और जेल की होलनाकी की बार बार कहानियों के बावजूद जबर का सामना करते हुए बगावत की क़ियादत की है। इससे भी कम तवज्जो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पर मरकूज है, जहां तालिबान में सबसे ज्यादा मनहूस अनासिर ने ख़वातीन के तालीम और मुनाफा बख्श रोजगार के हक को मुअस्सर तरीके से छीन लिया है। क्या यूरोप में फस्तायत की बढ़ती हुई लहर से लेकर तबाहकुन आबोहवा की तब्दीली को नाकाम बनाने की कोशिशों के लिए अदा की जाने वाली होठों की खिदमत तक, क्या इस तरह के मुज़हका खेज और बेशुमार दूसरे आने वाली चीज़ों की शक्ल का तयन करेंगे? ठीक है, आइए इस तरह के मुस्तकबिल का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म बढ़ती हुई तहरीकों को न भूली और अपने आप को याद दिलाएं कि जिदोजहद जारी रहती है और नताइज अक्सर हमें हैरान करते हैं। यही वजह है कि उम्मीद अबदी है। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.